Hello guys, this is Avirup Bose, and today here I am with Dr. Mohini Pandey. She is my batchmate of my same college, RANCHI, and today I'm taking her interview because she scored a very excellent rank in NEET PG 2023 examination, and her rank was 130. In May INI said 2023, she also scored 1200s and 1300s in November 2022 INI set examination. So first of all, Mohini Pandey. Congratulations on your such a good rank. And how are you? I'm fine, and thank you so much for your wishes. And I'm doing good. Thank you. Nice. Chalo. So we have been batchmates since last 6 years, and every one of our batch knows that how such a good student and laborious student she was. She also had honors in 3 subjects: pathology, microbiology, and obs and gynae. And this particular rank was expected from her, although you cannot expect such a good rank from anyone because it's all about hard work. But still, we are extremely happy for her for such a good rank. So, Mohini, let's start the interview. Right. So, Yeah. from when did you start your preparation? So I was studying continuously, like during my internship, as my internship started, I was preparing. Every day I was studying a few hours. But my exact preparation started during Jan 2022, like when we got to know that we were not eligible for the exam in 2022. So I started sincerely preparing from January. Yeah. January 2022, right? Yeah. Which means that you almost had 1 year, 2 months of preparation time, right? Yeah, almost. तो 1 साल पूरा लग जाता है प्रिपरेशन में ना, एंड दैट इज हाँ रिक्वायर्ड. वही है एक साल इन द सेंस कि इंटर्नशिप अगर आप कर रहे हो देन यू हैव टू पुट इन लाइक इंटर्नशिप में तो पूरा दिन नहीं मिलता है सो 3 से 4 घंटे रोज एंड इफ यू गेट सम एक्स्ट्रा टाइम लाइक वी गॉट 4 महीने आफ्टर द इंटर्नशिप सितंबर में आवर इंटर्नशिप एंडेड तो यू मेक यूज ऑफ दैट लाइक 8 to 9 और 9 to 10 आवर्स एवरी डे या अच्छा, नाइस नाइस नाइस. चलो, my next question is, what was your preparation source mainly? my preparation source was marrow from the third year itself. Fully marrow, right? Yeah I had Solely marrow. subscribed to only marrow. And apart from Marrow, did you subscribe for any other apps और कोई और चीज देखी थी like zainab vohra? आजकल बहुत हिट चल रहा है zainab vohra या फिर हाँ वही तो मैंने कोई ऐप और सब्सक्राइब नहीं किया था बट जब मैं बोर हो जाती थी लाइक बार बार वही नोट्स पढ़ पढ़ के मैरो के तो यूट्यूब पे आई यूज्ड टू वॉच जेनोबोरा मैम्स बीटीआर समटाइम्स या फिर आई लव प्रीति शर्मा मैम्स पैथो एंड समटाइम्स निकिता नरवानी मैम्स सो आई यूज्ड टू वॉच दीज रैंडम वीडियोस बट यूट्यूब पे ही देखती थी ऐसे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था. अच्छा, mainly it was Marrow, right? So Marrow में या to cover every 19 subject सब कुछ. नहीं इट्स नॉट नेसेसरी टू कवर एवरीथिंग क्योंकि इट्स वेरी वास्ट वो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं सो मैंने सारे वीडियोस देखे थे लाइक आई टुक इट मैरो गॉट मैरो फर्स्ट टाइम इन द थर्ड ईयर सो जैसे जैसे साल बीतते गए लाइक थर्ड ईयर फाइनल ईयर आई हैड कंप्लीटेड द कोर्स ऑफ थर्ड एंड फाइनल ईयर और फर्स्ट एंड सेकंड ईयर भी कुछ कुछ देख लिया था बीच में. अच्छा तो even if you have not watched like I did not watch a few videos of the short subjects तो मैंने वो revision videos से कर लिया था बाद में. अच्छा, So it's not necessary कि you need to watch everything. Yeah. It's not necessary that you watch everything and cover to cover Marrow. Yeah. Bits and bits में इधर से मतलब जब तक. Yeah. Absolutely. They have this feature of return mode. So those who are preparing mostly in the internship year, you can also skip some videos like which are not very essential because सब चीज से questions नहीं आते हैं. You need to plan. So you can make use of this. अच्छा, चलो. My next question is कि generally there is someone that who or something is your greatest strength during your examination. So what was or who was your greatest strength during your examination? It was your friends, parents, or someone else who? Yeah, my strength was my family, like my parents, my brother. They made sure that I get all the comfort at home. Like I came back home after the internship. So उन्होंने ensure किया कि मुझे सब comfort मिले. My mother was like giving food like time to time exact मतलब I did not have to worry anything. So that was a very good advantage from me. Like I was given my proper room and all. That's why I shifted from the hostel. Like you have not to do anything on your own, like वैसे. So you get complete time for you to study. And my friends also. Like I had few very close friends. And whenever I was in this mood of ranting, I used to call them Kajol and Pinky.
So I used to call them and I used to take out my frustration कि नहीं हो रहा है, नहीं मन कर रहा है. So yeah, they were always there with me. Means family mostly and also friends Yeah, yeah, who helped a lot during the preparation time. So yeah, coming sure. to the next question, Mohini, what do you Yeah. think was your best part of your preparation that helped you get such a good rank? Means वो क्या वो revision है, क्या वो question करना है, क्या है generally? Yeah, apart from these two, क्या चीज है वो? Yeah, What? I believe कि वो है कि वही sufficient questions करना, GTs टाइम पे देना. मतलब GTs जब आते थे तो मन नहीं भी होता था, but I used to give it, और उसको फिर रिवाइज करना, मतलब GT को रिव्यू करना. That's very important. And अच्छा, revision, you cannot forget revision. revision and questions and GTs. अच्छा, और एक चीज जानना है that many people tell कि हम लोग का पूरा सिलेबस नहीं हुआ, ये सिलेबस करके तब करेंगे हाँ, GT. हाँ, तो हाँ, क्या हाँ. है जब आज कर लेना चाहिए, जब GT हो कर नहीं, लेना. मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लगता है कि आप जितना जल्दी GT स्टार्ट करो उतना आपके लिए बेनिफिट है. लाइक व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग माय फर्स्ट GT, इट वाज समवेयर इन Jan ओनली व्हेन आई हैड स्टार्टेड माय प्रिपरेशन. मतलब अच्छे से प्रिपरेशन जब स्टार्ट की थी तभी पहला दिया था. एंड आई रिमेंबर माय स्कोर, इट वाज समवेयर अराउंड 410 और समथिंग. बट यू गेट अ हैंग ऑफ द एग्जाम. तो जितना जल्दी आप GT देना शुरू करो. 410 थी ना, तुम्हारा शुरू हुआ तो 410 से. नहीं, तो 410 से शुरू हुआ था, उसके बाद फिर 300 पे भी पहुंची थी, 360 370 पे भी थे उसके सेकंड थर्ड में एक दो बार. अच्छा, हाँ, और so it happened like 655. yeah, I got a score of 669. 669. Yeah. नाइस नाइस. तो इतना मतलब ये जो पूरा जो ग्राफ है ये इंक्रीज करने में मेन चीज तुम्हारा हेल्प था रिवीजन और क्वेश्चंस ना, राइट? Yeah, and Nice. questions. Yeah, GTs, revision. Yeah. Most important, GTs and revision, I would say. अच्छा अच्छा, चलो. My next question is, what problems did you face during your preparation? Were there any problems that you faced? Means like we know Yeah, that so anxiety issues right from starting from second year, yeah, and for which you yeah, also joined yoga classes right now in Bangalore. So was this the yeah. problem? Yeah, so I had these anxiety issues like from the beginning of the second year, end of the first year only, and I had consulted a psychiatrist, and he said that I had this generalized anxiety disorder. I never got panic attacks, but I used to feel very restless, like palpitations and all. And the whole day I would be thinking of something or the other. Like I used to see my friends all calm and relaxed, but I was never like that. Unnecessary issues would make me like get restless or something like that. So I was on medications also. I am on medications also. But then I started practicing yoga and mindfulness and meditation of Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, and that has helped me immensely. Like in my preparation also, I made sure that 1 ghanta, my father made sure that I did 1 ghanta ka yoga and I did my meditation. So that really helped me. And so after I completed, I came here to Bangalore to complete my 200 hours teachers training course in Sri Sri Yoga. Yoga helped a lot, right? Yeah, it absolutely does. Your yoga, your meditation, even if you are sane, this exam makes you go a little bit insane here and there. So that really helps. Yeah. ये तो है. चलो, my next question is that in your preparation, what was your biggest mistake that I am asking you? What was your biggest mistake that you advise your upcoming exam takers to not do that? वो एक क्या चीज है कि जो नहीं करना है? You think from your experience? I would list 2 mistakes. The first mistake is कि planning और execution बहुत जरूरी है. Like meticulous planning is important. I would slack sometimes here and there. कि अच्छा ठीक है, दिमाग में ही plan कर लिया. I did not write everything कि कैसे क्या हर दिन का क्या करना है वैसा. So somewhere or the other, I was not very well planned or well executed. तो थोड़ा बहुत वहाँ पे lack हुआ. And second is जो GT review. Yeah, I would just hate GT reviews. So sometimes मैंने पूरे व्हाइट बोर्ड पे भी लिख के रखा था कि GT3, GT4 ये सब्जेक्ट्स रिव्यू करने हैं, पर वो आज तक वो व्हाइट बोर्ड पे वैसे ही लिखा हुआ है. तो ऐसा भी होता था. बट स्टिल यू हैव टू रिव्यू योर GTs. जितना भी नहीं हो बट करना है जितना हो सके. अच्छा, तो GT रिव्यू इज अ बिग थिंग. अब वो हमको भी लगता था कि मतलब GT ज्यादा बड़ा चीज है, GT को रिव्यू करना, उसमें क्या गलती हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब चीज जानना. वही तो GT and another important thing was another mistake was planning. So reviewing your GT, I believe the better the planner you are, the better you will perform. Yeah. Right. चलो, बढ़िया है. Now my next question is, what was your average duration of study during your whole preparation per day? In one day, how much did you study? So during the time when I was doing my internship,
जब थोड़े मतलब थोड़े वैसे सब्जेक्ट्स होते थे जैसे PSM एंड ऑल्सो वी यूज्ड टू गेट सम टाइम, तब 3 से 4 घंटे या 4 से 5 घंटे रोज. And after I came back in September, it would be 8 to 10 hours every day. Yeah, 8 to with breaks, of course, Sundays. 8 to 10 hours consistently. या कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव. अगर आप कम भी पढ़ रहे हो, आप 6 से 7 घंटे भी पढ़ रहे हो, बट रोज पढ़ो. मतलब कि एक दिन छूट गया चलो ठीक है, पर ऐसा नहीं कि एक हफ्ते छुट्टी ले ली, तो दैट makes you go off guard your track. So consistency according to me is very, very important. Nice. My next question is, Mohini, that what made you keep your motivation? Like, it's a very daunting task to study for so many days and give examinations. Right? So what was your motivation and how did you keep your motivation? Yeah. So I also used to feel that कि पता नहीं कैसे होगा कि नहीं होगा, but I always made up my mind to think that जो अभी मैं कर सकती हूँ, I should do that. Like being in the moment, पढ़ सकती हूँ तो पढ़ती हूँ, बाकी फिर जो होगा देखा जाएगा. So whenever I used to feel low or I did not feel good, I used to go and talk to my father. Like he used to encourage me. I'm very blessed that way. Like he used to say कि अभी जो कर सकती हो वो you do, no, you study. And फिर जब पढ़ने लगती थी तो ठीक लगने लगता था. So every time I used to feel that, I used to just tell myself कि yes, I can do it, I will do it, and let me just study. Let's see what will happen. अच्छा, नाइस नाइस. सो दिस वाज योर मोटिवेशन, राइट? तो अपने आप में ही मोटिवेशन आना मींस अपने आप को ही ऊपर ले जाना कि हाँ, नाइस नाइस, दैट इज वेरी गुड थिंग. Yeah, that's very important क्योंकि like I used to also watch videos of some toppers and all toppers or every student who used to do good sometimes, but I believe कि self motivation goes a long way. मतलब वो बहुत जरूरी है. Motivation is a very important thing, है ना? Yeah. ये बात तो है. I also. चलो, my next question is that what was your actual exam day mental status and how did you feel when you were giving your examinations? So that the morning was like फिर वही उस रात को तो ठीक से नींद आती नहीं है, whether you are or not on medications, तो वो वैसे ही होता है. But सुबह में I was like कि सबसे पहले I went and prayed to God. Belief in God, I believe, is very important. Like there is someone who is taking care of you. तो वो belief के साथ जाना जरूरी है. And I was anxious, nervous, but I had this confidence somewhere कि I was doing well in my GTs in the end. So बहुत खराब नहीं होगा. जब पढ़ा है तो कुछ तो answers करूंगी, ऐसा नहीं. So this positivity was still there somewhere. Yeah. Right. Achha, and how was while before giving the exam, you asked how was your time when you were giving the exam. So before giving the exam, I took long deep breaths like I use every time before any crucial thing happens. And I started like I saw the questions, I started answering them. मतलब questions करते जा रही थी और जो भी कुछ उल्टे सीधे thoughts आ रहे थे उसको साइड पे थोड़ा रख के करते जा रही थी बस. ठीक है. रिव्यू की थी क्या? मतलब many students do ना कि पूरा करके फिर रिव्यू किए हैं, की थी क्या? नहीं पूरा तो नहीं रिव्यू, बट आई यूज वही जो क्वेश्चंस में डाउट हो रहे थे उसको मार्क करके रख लेती थी. उसमें भी ये रखना था कि बहुत मतलब जिसमें थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है उसको न रख ले. मतलब आई ट्राइड कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर ले, बिकॉज अदरवाइज इफ यू हैव बहुत सारे क्वेश्चंस एट द एंड तो फिर वो रिवीजन गड़बड़ हो जाती है और आपके क्वेश्चंस कुछ छूट जाते हैं. तो मार्क दोस क्वेश्चंस व्हिच यू फील कि अच्छा 50-50 है कि चेंज कर भी सकते हैं, तो दोस क्वेश्चंस. चलो my next question is how did you feel when you saw your result? ये बताओ. Yeah, it was very, very overwhelming. It happened कि I got to know it about that the result has come in a very weird way. Like I was in the kitchen preparing coffee or something, and then my friend rang up and said कि result आ गया. And I saw on WhatsApp कि सब लोग अपना rank share भी करने लगे, and I have not still seen it. So I was in panic at that time. फिर देखा अपना PDF में rank, so I did not believe it initially पहले तो. फिर 2-3 बार चेक किया, and the first thing I did was call my father. He was also in his office trying to, because the site was hanged, you could not see it from anywhere. So I called him. He was extremely happy, and that it was very overwhelming. Yeah, nice. I cannot forget that moment. Yes, exactly. जिंदगी भर याद रहेगा नहीं? Yeah. हमेशा याद रहेगा. Now coming to the most important part of our video, advice part, right? Like many juniors, many exam takers want to know that what is your advice, right? So first of all, I want to ask that what is the subject priority according to you? Subject priority according to me, like final year is very, very important. Final is final is the most, like it's very important. But क्या होता है कि we try to give too much effort on the final year. But final year में तो आप उसको कर ही रहे हो, so you are fresh with it. But second year subjects, I believe, you need to give a lot of importance. Like they form a very important part. Patho, like, pharma, micro. Subject priority is mainly second year,
उसके बाद फाइनल या ईयर की? आई बिलीव, या क्योंकि अगर आप मेडिसिन कर रहे हो, यू आर स्टिल, हाँ, यू आर डूइंग मेडिसिन मेडिसिन मेडिसिन, बट वो इतना वास्ट है कि यू कैन नेवर कंप्लीट इट, बट इफ यू आर गुड विथ योर पैथो एंड फार्मा, a major chunk of medicine is done, I feel. एग्जैक्टली। अच्छा, Yeah. व्हाट सब्जेक्ट्स टू लीव? कोई सब्जेक्ट छोड़ना है? छोड़ सकते हैं क्या कोई नहीं, सब्जेक्ट? छोड़ना कुछ नहीं है। नहीं, आई डोंट बिलीव इन दिस की सब्जेक्ट छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यू कैन गेट अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ द शॉर्ट सब्जेक्ट्स, और फिर अगर आपने उसे छोड़ दिया है, एक क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो यू नीड टू नो, लाइक, अगर इन डेप्थ भी नहीं है, बट बेसिक्स जो क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन डू PYQs और शॉर्ट सब्जेक्ट्स, अगर आपको थोड़ा डाउट है कि नहीं टाइम मिल रहा है, बट डू एवरी सब्जेक्ट। क्यों एटलीस्ट या, करके जाना ही है, अगर कोई चीज छोड़ना भी है हाँ, तो जाना ही है। या, राइट राइट। PYQs करके जाना ही है। अगर आपने डिटेल में मतलब नई वीडियोस देखा है, या MCQ वीडियोस भी नहीं देख पाए हो, तो एटलीस्ट MCQ डिस्कशन वीडियोस देख लो, PYQs कर लो, दैट इज इनफ। अगर आप, बट छोड़ना नहीं है कोई सब्जेक्ट, अच्छा अकॉर्डिंग ठीक। टू। वाज योर लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी? लास्ट एक महीना में क्या करना था? या, लास्ट एक महीना में मेरा स्ट्रेटेजी वाज, लाइक, आई हैड सीन द मैरो रिवीजन वीडियोस एंड बिफोर, और आई हैड रेड द नोट्स, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी दैट आई यूज्ड वाज रिवाइजिंग द रिवीजन वीडियोस, लाइक जो सब्जेक्ट्स में जो चैप्टर्स आई यूज्ड टू फील अ लिटिल टफ, या फिर GTs में कंसिस्टेंटली रॉन्ग हो रहे थे, आई यूज्ड टू रिवाइज दैट, आई हैड मार्क दैट एंड रिटन दैट, और उसको बार बार रिवाइज करती थी। और कुछ MCQ डिस्कशन वीडियोस भी जो मुझे हाई यील्ड लगे थे, आई यूज्ड टू रिवाइज दैट, एंड क्वेश्चंस, लाइक आई यूज्ड टू सॉल्व रैंडम, लाइक सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं, या फिर यू कैन कस्टम मॉड्यूल्स पे क्वेश्चंस बना के 19 सब्जेक्ट्स का कर रहे हैं, सो दैट वाज माय स्ट्रेटजी। अच्छा, मींस रिवीजन और क्वेश्चंस और जो गलत हो रहा था, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब, राइट? हाँ, बात, या अच्छा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द लास्ट डे? आखिरी दिन में क्या करना होता है? कुछ करना भी होता है या कुछ नहीं करना होता है? मेरे लिए तो करना था यार, वो लिखा था ना, वो जैसे जैसे 10 दिन बचे थे, वैसे वैसे नोटबुक में लिखते जा रही थी कि अच्छा ये वाला बचा हुआ है, ये वाले को लास्ट दिन करेंगे, ये वाले को लास्ट दिन करेंगे, क्योंकि वो होते हैं ना कुछ जैसे IPCs और ये सब, तो लास्ट दिन तो मेरा लिस्ट बहुत लंबा बचा हुआ था। सो आई यूज्ड टू, आई मैंने जल्दी जल्दी जो जो था, छोटा छोटा चीज ही रखा था, बट था बहुत सारा, तो उसको जल्दी जल्दी टिक कर करके करती जा रही थी। और हाँ, बट सही टाइम पे बंद करना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज वही चलते रहेगा, तो जितना हो पाया, हाँ, जल्दी जल्दी बस टिक कर करके मेन मेन जो इम्पोर्टेंट थे वो सिलेबस करते गए बस। खत्म होता है, 10 साल बाद भी अगर एग्जाम ले किसी इंसान का तो भी खत्म ना हो, राइट? वही वही बात है, तो फिर आप उसमें से चूज कर लो ना, जैसे आप IPC है तो छोड़ के नहीं जा सकते। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैंने 10-12 IPC किए थे, उसमें से भी एक आ गया था वो मदर वाला, वो जो दैट शी लीव्स अ चाइल्ड और समथिंग, ऐसा क्वेश्चन आ गया था, तो वो करके गई थी, तो बहुत अच्छा लगा कि चलो लास्ट दिन किया था वो आ गया। नाइस नाइस नाइस। चलो, या, माय क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट Zainab Vohra's ma'am video? They are actually very क्या, important. This is a very outdated question I'm asking, that how are they important or not, right? But still, tell something about it. या या आई फील शी इज लाइक द टीचर मैन, मतलब वो तो जो पढ़ाती है इट्स वेरी गुड। सो अब मैंने बहुत तो नहीं देखा उनका, बट आई यूज्ड टू वॉच द BTR, लाइक दे यूज्ड टू गिव अ हैंग ऑफ द होल सब्जेक्ट, लाइक होल 19 सब्जेक्ट्स में से कुछ 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 निकाल के, तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील कि मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, आई यूज्ड टू वॉच हर वीडियोस, तो कुछ ना कुछ पैसिवली भी जाता ही था, Important, right? बट आई वाज नॉट, बट आई नॉट सब्सक्राइब टू एनी ऑफ हर लाइक एन अकेडमी, और तो only on YouTube I used to watch BTRs ही देखा था, और ज्यादा वैसे कुछ तो नहीं देखा था, but yeah, I did watch. What are your views about first aid? फर्स्ट एड के बारे में मैंने सुना बहुत है, बट यूज नहीं किया है। अच्छा। बट आई फील कि जब मैंने मतलब थोड़ा बहुत देखा था, जस्ट डाउनलोड तो किया था, थोड़ा बहुत देखा था, बट सिंस फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ माई प्रिपरेशन आई हैड नॉट यूज्ड इट, सो आई डिसाइडेड कि आई शुड नॉट, लाइक, बीच में आई शुड नॉट स्टार्ट इट, सो बट आई फील दो स्टूडेंट्स हु फील कि फर्स्ट सेकंड ईयर बहुत मतलब पीछे चला गया, याद नहीं है, दे कैन मेक यूज ऑफ इट, या आई बिलीव इट्स अ गुड सोर्स, बट अगर आपने नहीं किया है तो अचानक से बीच में मत उठाओ, देन यू विल बी कंफ्यूज्ड। ये बात तो है। या, चलो, या व्हाट अबाउट नेक्स्ट? अभी नेक्स्ट एग्जामिनेशन आ रहा है, व्हाट आर योर व्यूज एंड व्हाट आर योर एडवाइस अबाउट नेक्स्ट? कुछ अच्छा एडवाइस टू जूनियर्स। या माय फर्स्ट, जो मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी कि करिकुलम जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट सब्जेक्ट और उसका मैटर सेम रहेगा, राइट? व्हेन वी वर इन द फाइनल ईयर ना, तभी से दिस क्रेज अबाउट नेक्स्ट नेक्स्ट वाज ऑलवेज देयर, एंड इफ यू आस्क माय फ्रेंड्स दे विल ऑलवेज से कि मेरा यही रहता था कि अच्छा ठीक है ना, जो पढ़ रहे हैं वो तो आएगा ही ना, उसमें से ही कुछ आएगा ना, सो कंटिन्यू टू स्टडी, डू नॉट fall prey to this rumors और ये कि ये होगा वो होगा, the curriculum will remain the same, medical science तो change नहीं हो जाएगा ना, so continue to study and you will get the hang of it कि क्या होने वाला है क्या नहीं। yes राइट। चलो, apart from studies, one advice to the juniors,
पढ़ाई छोड़ के क्या एडवाइस देना चाहती हो? My advice would be take time out for yourself, like at least half an hour initially. If you have a longer period of preparation, you can take out 1 hour or 1.5 hours or half an hour for yourself. और उस yourself में मतलब ये नहीं है कि मतलब आप फोन चला रहे हो या यूट्यूब चला रहे हो, because we feel कि वो relax कर रहा है, but ultimately that strains our mind and body. तो do something which you like कोई भी hobby उठा लो. Like I used to do these mandala arts and all, नया उठाया था. फिर मेरा रूम पूरा सफेद था, मेरे घर का रूम. तो मैंने उस पे कुछ बनाना स्टार्ट कर दिया, कुछ ऑर्डर करके कुछ चिपकाना स्टार्ट कर दिया. तो वैसे you do not get out of that monotony, like पढ़ना है, it becomes monotonous. So take out some time for some hobby, I believe. Do meditation. I believe meditation या mindfulness practice करना is very very important. तो इसके लिए वर्क करना है, अपार्ट फ्रॉम स्टडी ये सब मेंटेन करना है. Yeah. अच्छा. चलो, माय लास्ट क्वेश्चन इज कि समराइज whole of your advice in 3 lines. At the end, 3 lines क्या would be चीज याद रखना चाहिए स्टूडेंट लोग को? 3 लाइन्स में समराइज करो, बताओ. revision first and foremost, the most important I feel. Revision, giving GTs consistently and taking something from it, like दे के छोड़ नहीं देना है. Grasp something from it, क्या हो रहा है, क्या नहीं जा रहा है. And solving questions, PYQs, very important. Means 3 things are revision, solving GTs, and then solving questions, right? These things are And I have one fourth one also. Believe in oneself. Believe in yourself. क्योंकि ये मेरे में थोड़ा lacking था. I used to question myself a lot. So believe in yourself and then do all the 3. Yeah. Believing in yourself and baki revision, GTs and questions, right? Yeah. So these are the most important thing, guys. And I also think that believing in yourself should be put at first, right? उसके बाद ही सब कुछ होता है. चलो, तो my last question भव्या, my last question मोहिनी, ठीक है? What department do you want to take? So I'm planning to take up radio diagnosis. Let's see which college I get. I'm not very sure. Like Delhi, if I get it, will be good. क्या चीज? Yeah, so I'm planning to take up radio diagnosis, and I'll see if I can get a college like in somewhere around my rank, somewhere in Delhi or IMS BHU. So I'll have to see as the counseling goes on. Means radio ही है. And what about medicine? Yeah, that's for sure. What about medicine? Medicine is something which I like to study, but I don't feel कि कोई clinical subject में I will be able to give my 100%, because what a type of person I am, I feel doing diagnosis and too much patient interaction, वो मतलब मेरे forte में नहीं है. So radio diagnosis is like you have to be by yourself most. You have to study more and diagnose करना है, बहुत ज़्यादा prescribe नहीं करना है. So I think it will be better for me. Like, in this thing we two are on the same path. I think I have also same view. Clinical नहीं करना है. नहीं करना है मुझसे, मतलब वो चीज है ना, वो इंटर्नशिप में ही समझ में आ गया था कि मेडिसिन सर्जरी गायनी तो नहीं ही लेना है मुझे, मेरे लिए, बिकॉज वो एक्चुअली आई हैव दीस एंजाइटी इश्यूज एंड ऑल, और वो बहुत मतलब इट कैन ट्रिगर इट, आई फील लाइक दैट, क्योंकि बहुत ज्यादा भाग दौड़ और ये सब देख के आई गेट लिटिल ट्रिगर. सो यहाँ पे भी दिक्कत होगी, आई नो आई हैव टू स्टडी इट लॉट, बट स्टिल आई फील इट विल बी बेटर देन दीस क्लिनिकल. चलो मोहिनी, that was all. And to my viewers, this was Mohini Pandey, and so this was her advice about the whole examination part and about apart from the examination part, other things. And so thank you, Mohini. It was nice. Thank you so much, Abhirup, for taking this interview, for taking out time for taking this interview. So thank you so much. And we are really proud of my whole batch of ours is actually very proud that you got 130 rank. Means हम लोग बोल पाएंगे कि कोई रिम से 130 rank लाया था कभी, people will know. So it is a very big thing for our college, I should say, that you made us proud, right? So thank you so much. I feel God's blessings were there with me and with you also. So you have scored such a good rank in INI, like 160, and even in NEET. So don't be humble. You two are a very good student, and we are all proud of you also. Yeah. Yes. Chalo Mohini, thank you for the interview, and hope you get your desired college. Bye. Yeah. Thank you so much.